Welcome. This is the next lecture of differential geometry. In today's lecture, we will discuss theorems, and these are the very basic theorems in differential geometry. So we will start with the theorem and the statement of the theorem. Necessary and sufficient condition that a curve to be a straight line is that kappa equal to 0 at all points. Mean to say that kappa equal to 0 means curvature at all points 0. And it is self-explanatory. If a curve is a straight line, there is no bending, then there is no curvature, you can say. So see, how will we prove this theorem? So necessary condition, we suppose that equation of straight line, we take curve is a straight line, and we will know that equation of straight line like this. So r equal to a s plus b, a and b are the constant vectors and s is a parameter. It is the equation of line. And definitely, you know, if we go for the interpretation of this, what this means, it is a rotary point. And this is the direction of the line. And this is the position vector which through this line pass through. And we have discussed this equation of straight line vector, I think in +2 class. We discuss all these two. If any problem, you can go through in that class how we write this equation of straight line. And s is a parameter. So what do? We differentiate this respect to s. So this is r dash, and derivative of as is equal to a, and derivative of b is 0 because a and b are constants. So that means t equal to a. So tangent is constant. So again, if we differentiate respect to s, we get t dash equal to 0. And by Fermat formulae, we know t dash is equal to kappa n. So by using this formula, we get 0 equal to this t dash equal to 0. So 0 equal to kappa n. So if we squaring both sides, so this is unit vector. So unit vector is n square will be 1 and k square equal to 0. That means k equal to 0. So it is clear that the necessary condition for a curve is a straight line for kappa equal to 0, curvature equal to 0. As for sufficient condition, if we take curvature kappa k equal to 0, then by Fermat formula t dash equal to 0, t dash k n by Fermat formula. So if we use the value of kappa here, so we get t dash equal to 0. T dash means r double dash equal to 0. If we integrate this equation with respect to s, so what do we get? R dash is equal to a, and a is a constant vector. Again, if we differentiating with respect to s, we get r equal to as plus b, where b is constant vector, and this is obvious. This is equation of straight line. So hence k equal to 0 is a sufficient condition. So this is very important and very simple theorem. If a curve is a straight line, then curvature will be 0. If curvature is 0, then curve will be straight line. Both ways, theorem is true. Okay, one more thing.
what in this theorem? If C is a curvature, C is a curve for which V, that is binormal, varies differentially with arc length, then to show that a necessary sufficient condition that curve C is a plane curve. Plane curve is that tau equal to 0 at all points. Mean to say that if curve is a plane curve, then torsion at all the points of the curve will be 0. This plane curves mean that curve should lie in a one plane. वो जो कर्व है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो एक प्लेन में लाई into that suppose it is this is a curve, this is a plane. So कर्व आपका डेफिनेटली अगर कर्व जैसे भी हो बट वो that should be lie in this curve. वो कर्व आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाना चाहिए. If it goes out of the plane, that curve may not be plane curve. कर्व कोई प्लेन मींस को दिस नॉट वी टॉकिंग अबाउट प्लेन मींस दैट कि प्लेन में होना चाहिए. प्लेन में को कुछ भी हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स, एनीथिंग. ओके, बट वो कर्व आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाना चाहिए. अगर आउट ऑफ द प्लेन जाता है देन वी कैन नॉट से कि दैट कर्व इज प्लेन कर्व. ओके, सो इन दिस दैट कि अगर वो कर्व अगर प्लेन में लाई करता है तो इस कर्व के हर पॉइंट के ऊपर जो टॉर्शन होगी वो 0 होगी. सो यू सी हाउ विल वी प्रूव. लेट कर्व लाई इन ए प्लेन. हमने मान लिया कि कर्व प्लेन में लाई करती है एंड V इज नॉर्मल टू द ऑस्कुलेटिंग प्लेन. और जो कर्व लाई कर रहा है उसको हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन मान लिया. सो डेफिनेटली अगर ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है तो B वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. B is normal to the osculating plane. The plane curve lies in the plane curve lies in the osculating plane. It must be fixed. और हमने इसको fixed curve माना है. ठीक. Now we know N and T lie in a osculating plane. Definitely उस curve के ऊपर जो tangent होगा और जो उसका normal होगा वो दोनों के दोनों osculating plane में lie करेंगे. So definitely B is nothing but it is क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ N and T. ये T and N इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा. So we assume that this curve is fixed. So definitely this cross product will be fixed. So that will be constant. So we assume it equal to A. On differentiating this respect to S, we get V dash equal to 0 because A is constant vector. And by using Fermat formulas, we know that V dash is equal to minus tau N. And by using this V dash equal to 0, I substituting this, then what we get? Minus 0 equal to minus tau N. And what we do, we just squaring both sides and we get tau square equal to 0. That means that tau equal to 0. So necessary condition for the curve to be a plane curve, tau equal to 0 होना चाहिए. अगर हमने प्लेन कर्व लिया, वो कर्व लाइन है, प्लेन है, तो टॉर्सन 0 आ गई. नाउ सब्सिडेंट कंडीशन में क्या करेंगे, हम मानेंगे कि tau equal to 0 वी विल प्रूव कर्व शुड बी लाइन अ प्लेन या प्लेन कर्व. सो सेम वेरी सिंपल प्रूफ. दिस इज रिवर्स ऑफ दिस. tau 0 है, सीरेट फर्नेट फार्मूला यूज करके हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे और इस फार्मूले में tau की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, उससे V dash 0. Then what we do, we was integrating respect to S. If we integrate this, what we get? We get V equal to A. So A is constant vector and V is, you know, V is normal, binormal to the plane. So there implies binormal vector V is a constant.
if the equation of the curve is r equal to r of s, मैंने एक कर्व की इक्वेशन ले ली और मेरे को अब ये प्रूव करना है दिस कर्व इज अ line plane. So we have r dot b, हम r dot b का डेरिवेटिव लेके जाए, ठीक, मैंने इस कर्व का b के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, साथ में डेरिवेटिव ले लिया. So by using the product rule, derivative of first function dot second function as it is plus derivative first function as it is and derivative of second, we use that. So clearly v is a constant, so derivative of v dash equal to 0, so it becomes 0. Or this is tangent and this is y normal, and tangent or y normal be 0 होते हैं. So what we get, r dot b dash equal to 0. So from this we get r dot b dash equal to 0. So on integrating this, we get r dot b equal to a constant of integration, so that constant will be vector. If we take this a1 equal to 0, we can take it. अगर हमने ये 0 लिया तो it means that y normal का r के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा. It means that r is any vector, for r is an arbitrary point is moving, r is arbitrary, और इस arbitrary point का इस b के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री मिल रहा है. So that is written in this line that any that implies that any vector from the origin to the curve is at right angles to the fixed y normal b. क्यों b तो का फिक्स था और कोई भी पॉइंट अगर हम उसके साथ ले रहे हैं, सो डेफिनेटली वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है. मीन टू से दैट सिचुएशन कुछ इस ढंग से होगी कि हमारा कर्व ये से है और कर्व के ऊपर ये y नॉर्मल है और यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन है. और इस पॉइंट के साथ जो भी हम अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं, सो कोई भी लें तो डेफिनेटली वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली 90 बने, इट विल बी 90. अगर हम इस पॉइंट के ऊपर y नॉर्मल लेते हैं, अगर ये y नॉर्मल यहाँ पे है, तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ से लेंगे सो ये एंगल 90 बनेगा. और यहाँ पे हम लेते हैं तो y नॉर्मल तो यहाँ ऊपर की तरफ होगा, और यहाँ से लेते क्योंकि ये फिक्स्ड होगा, इसका जो डायरेक्शन है वो एक ही होगी, तो 90. ठीक, मीन टू से दैट, बट ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो कर्व है वो एक प्लेन में होगा. तो अगर कर्व आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो फिर ये 90 एंगल नहीं बनेगा. सो फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट hence the curve must be a plane curve. तो कर्व प्लेन कर्व भी होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है. So thus tau equal to 0 is also sufficient condition for the curve to be a plane curve. So हमने tau 0 लिया तो कर्व हमने plane curve शो कर दी. So this is all about this theorem. So we just completed two theorems. One is if curve is straight line, then curvature equal to 0. And if curvature is 0, the curve should be a straight line. And another one is that if curve lie in a plane, yeah, curve is a plane curve, then torsion will be 0. And if torsion is 0, then curve should lie in a plane. So next is very useful results. We always use this. What this? The necessary and sufficient condition for the curve to be a plane curve, सेम थ्योरम जो सेकंड हमने पढ़ा, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन अलग तरह से करा है, इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ r डैश r डबल डैश and r ट्रिपल डैश इक्वल टू 0. सो इन तीन वेक्टर का अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है, सो कर्व्स विल बी अ प्लेन कर्व. सो जस्ट चेक कैसे चेक होता है ये देखिए. तो सबसे पहले we know r dash is equal to t, we differentiating it with respect to s, so what we get, r double dash equal to t dash, और फॉर्मेट फॉर्मूला से यहाँ से t dash का वैल्यू यूज कर लिया हमने. so r double dash is equal to kappa n,
We give it equation 2. This is equation 1. We're taking cross product of these two. So R cross R double dash is equal to S cross N, T cross N, kappa T cross N, and T cross N is B vector, Y normal. Again, we're differentiating this equation 3 with respect to S. So by product rule, derivative of first function, second as it is, plus first function as it is and derivative of second. And the right hand side, kappa is also variable. It vary with the curve. So first function as the derivative of second plus derivative of first, and the second function as it is. So kappa is scalar, but it is vary with the curve. जैसे जैसे s change होगा तो obviously curvature भी change होगा. So from left hand side, we get R cross R double dash cross R double dash. So two vectors same हो तो एक cross product उनका 0 होता है. So A cross A is equal to 0. We know very well. So ये term 0 हो गया. What we left with? R dash cross R triple dash is equal to minus K kappa tau N. B dash का हमने usually use कर लिया भाई Fermat formula. B dash is minus tau N and K dash B as it is. So we just complete the half parts. हमारे पास ये वेक्टर आ गया और साथ में हमारे पास ये डबल डॉट ये पड़ा हुआ इक्वेशन 2 में. व्हाट वी डू, हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ का स्केलर प्रोडक्ट ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे यू कैन से. सो वी टेक डॉट प्रोडक्ट. सो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा हमारे पास आर डबल डैश डॉट आर डैश क्रॉस आर ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, अब एन के साथ हमें इस तरह करना है. सो एन क्रॉस एन डॉट एन इज इक्वल टू 1 एन डॉट एन, और यहाँ पे बनेगा एन डॉट बी. एन डॉट बी विल बी 0 because they are perpendicular to each other. So we left with minus kappa square tau. So this is nothing but it is scalar type product. So there is some change because there should be a rotation. There will be order. So this is r dash के साथ ट्रिपल डैश था तो इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे. सो एक नेगेटिव रिमेन रहेगा. सो नेगेटिव को दोनों तरफ एडजस्ट करेंगे. इट विल बी पॉजिटिव नाउ. सो दिस इज ऑल scalar type product of these three vectors, that is kappa square tau. And as we know that if this equal to 0, if this equal to 0, then kappa square tau equal to 0. So either k equal to 0, kappa equal to 0, or tau equal to 0. So definitely हमने ये पढ़ रखा है कि जब कर्व प्लेन होता है तो tau equal to 0 होता है. तो just a while we just take tau is not equal to 0. So we see what will happen. Let tau is not equal to 0 at some point of the curve, then it in the neighborhood of this point, tau not equal to 0, hence kappa equal to 0 in this neighborhood, and hence the curve is a straight line. Obvious, अगर ये 0 नहीं है तो definitely kappa तो 0 होगा. kappa 0 होगा तो वो जो curve होगा that will be straight line. तो अगर हम kappa tau not equal to 0 लेते हैं तो कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा. तो that it means that it not be 0, it not equal to 0, it will be 0. So therefore tau equal to 0 at all the points and curve is a plane. In the converse part, if we take tau equal to 0, that is the curve is a plane. From the equation 5 we had this one, and hence the necessary condition is necessary as well as subsent. So both ways, if this equal to 0,
Then curve is a plane curve. Curve is plane curve. Plane curve. और हम इक्वेशन 5 से ये इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अगर टॉ 0 है तो कर्व आपकी प्लेन कर्व होती है। By doing this, we get from the equation 5th, putting this tau equal to 0, we get this one. So now we have a new result. If curve is plane curve, then triple scalar product of these three vectors equal to 0. Now, sometimes we use this theorem in other way. So you can see sometimes it is happen like this. In the place of because in the previous theorem we use u is depending r is depending upon parameter s. If in the place of s, if r is depending upon u, r is arc length. Agar u is any parameter, then we can use this theorem in this form. In this form, it is in the place of dashes there is dot, and dot is nothing but it is derivative r dot is nothing but it is dr over du. So we should know how to convert these dashes to dot. So you see, if you see r dash is nothing but is dr over ds, and by using chain rule dr over du and du over ds, so dr over du is dot r dot, and ds over du is equal to s dot. So this is r dash is equal to this one. This is very, very important. In the differential geometry, we have to use this notation frequently. R dash and r dot, vice versa. So you should know how to convert to these one into other. And another one is r double dash. So r double dash is nothing but it is derivative of r dash with respect to s. So I just putting the value of r dash from here, this, and you using quotient rule. And by quotient rule, you simply can see this is the result. And the same r triple dash. To r triple dash is nothing but it is a derivative of r double dash with respect to s. So this is the value of r double dash. We just putting here and differentiate with respect to s. We use quotient rule. So by using this, you will interpret this. If any problem, you can ask. Simple, the whole explained in detail, and you can see this term and this term is cancel out. So this is up to here, and after simplification we get this result. Okay, what we do, we just replacing these r double dash and r triple dash in the scalar product of these r dash, double dash, and triple dash. So what we'll get like this. You will see in the first vector and second vector there is a proportional vector. देखो ये r dot है तो यहाँ पे भी r dot है. तो it means that अगर मैं इस वेक्टर को लेता हूँ और इस वेक्टर के साथ इस सेकंड वेक्टर को लेता हूँ, तो ये स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. चाहे मैं इस पार्ट से कुछ भी लूँ, चाहे सभी को ले लूँ, क्योंकि दो अगर स्केलर प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर सेम हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कभी, तो ये डेफिनेटली ऑलवेज 0 आता है. ठीक है. सो डेफिनेटली ये आपका जब इसके साथ आएगा तो ये 0 हो जाएगा. सो इट मीन दैट ये पार्ट कभी आएगा. तो फर्स्ट वेक्टर से ये आ गया, सेकंड वेक्टर से ये आएगा डबल डॉट वाला. अब थर्ड वेक्टर में से देखना है. थर्ड वेक्टर में ऑब्वियस है, अगर ये फर्स्ट डॉट वाला आएगा, आर डॉट वाला आएगा, तो फिर वही बात होगी, फर्स्ट और लास्ट में डॉट प्रोडक्ट सेम हो जाएगा, सेम हो जाएंगे डॉट प्रोडक्ट में, तो फिर वो 0 हो जाएगा.
अगर हम ये वाला पार्ट लेंगे आर डॉट वाला, आर डबल डॉट वाला, तो सेकंड पार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जीरो हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, सो डेफिनेटली रेसिप्रोकल जीरो हो जाएगा। तो ओनली वी हैव टू टेक दिस वन, दिस वन। बाकी आपके जो भी प्लस माइनस जो आगे वेक्टर बनेंगे वो सारे के सारे जो टोटल प्रोडक्ट होंगे वो जीरो हो जाएंगे। तो नॉन जीरो आपका यही बचेगा। तो जितने भी ये स्केलर्स हैं इसके साथ इनको मैं कॉमन ले लेता हूँ। सो इन डिनोमिनेटर आर डॉट, सॉरी एस डॉट एन एस डॉट 4, तो एस डॉट की पावर 5 आ गई, और डिनोमिनेटर में एस डॉट एस क्यूब डॉट क्यूब एंड एस डॉट 7, तो 11 बन गया। सो दिस इज द कन्वर्सन in r dashes to r dot, and this is very very important. So you can simply use this formula in the previous theorem. You can prove theorem very easily. So that's all for the today's lecture. Okay.